Good evening everyone, welcome to EduTap and welcome to another important CT 360 series session in which we cover the important general awareness and economic and social issues current affairs from examination point of view. My dear friends, today we will be covering the important current affairs from 2nd to 4th of August 2025. If I am audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. And again, I believe that all of you have come here with the proper revision of the previous dimensions and the aspects of the session that we have taken in the previous session, and today also we will be conducting a small and quick revision test for all of you to analyze whether you have retained all the important information from examination point of view or not. So my dear friends, a very good evening to everyone and I hope कि आप सभी की preparations काफी अच्छी चल रही हैं. और last week आप सभी ने देखा था that we EduTap has come up with a very big surprise for all of you, right? And let me tell you my dear friends that वो जो surprise था, there were some students जो surprise का पूरा फायदा नहीं उठा पाए. That was basically a never ever before offer that we have come up at EduTap, the kind of discount that we have never offered to the people, because you can see that exam season is on, right? Exams का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब हमें इंश्योर करना है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक सही दिशा में है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में है. एंड दैट्स व्हाई वी कम अप विद द डिस्काउंट ऑफर्स फॉर ऑल द पीपल, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, सो बेसिकली वो हमारे कोर्सेज के साथ उन तैयारी को कर सकते हैं. लेट मी टेल यू गाइस, एक गुड न्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने हमारे पिछले पीरियड के अंदर उस डिस्काउंट का फायदा नहीं उठा पाए. सो वी हैव एक्सटेंडेड द सेल फॉर दो पीपल. सो यू कैन सी हियर दैट नाउ वी हैव एक्सटेंडेड दिस एंड नाउ वी आर प्रोवाइडिंग यू द flat 74% off on our various courses for the regulatory bodies exams like RBI grade B, IFSCA grade A, SEBI grade A, EDI grade A, NABARD grade A and the PFRDA grade A examination. So please ensure that now this time at least you guys are able to make sure that yes, you are availing these benefits of the discounts and you are ensuring your प्रिपरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन. और अगर आपके कुछ फेलो एस्पिरेंट्स है जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर डिस्काउंट्स है दोस्तों. लाइक वी आर हैविंग द फ्लैट 75% ऑफ फॉर द पीपल. जस्ट व्हाट यू हैव टू यूज, जब आप उस कोर्स को परचेज कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू यूज द कोड 1 time 75. सिमिलरली यूपीएससी, ईपीएफओ, ईयूएओ एंड एपीएफसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, राइट? एंड आई होप आप सभी ने उसके फॉर्म्स फिल कर लिए हैं. और उन एस्पिरेंट्स के लिए भी हमारे पास फ्लैट 60% ऑफ है एंड द पीपल कैन यूज कोड 1 time 60. सो आप किस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, यू कैन सी दैट वी हैव कम अप विद ऑल दीज काइंड ऑफ डिफरेंट डिस्काउंट्स so that आप ensure कर सकें and we can also contribute some portion in your success and helping you to become the next officer this year. So my dear friends, I hope that everything is good and fine and everybody is able to see all these parts. Now let's move ahead to the very important part of these sessions, and we all know that we at EduTap have come up with so many important current affair initiatives so that we can ensure that you are doing your comprehensive preparation for the current affairs. That's why we are having a government scheme session that we conduct every Monday, Wednesday and Friday at 10:30 AM. We have a Perspective 360 series session for the descriptive writing that we conduct every Monday, Wednesday and Friday at 5 PM. Then the people who are preparing for banking examinations and the RBI grade B officer exam, so for them finance current affairs and RBI notifications are very important, and that's why we are having the finance 360 series session that we conduct every Tuesday, Thursday and Saturday at 10 AM. And then the last but not the least, your G and ESI session, that is the CT 360 series session that we conduct every Tuesday, Thursday and Saturday at 5 PM. So my dear friends, please ensure that you are just taking the screenshot of the schedule. वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है दोस्तों, सो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्केड्यूल का अपने पास एक स्क्रीनशॉट रखिए so that whenever these sessions are coming live, so you can basically avail the benefit of these sessions. Apart from that, the another important thing is that you can also ask your doubts one-on-one during with the help of this particular session when the faculties are taking these live sessions. Okay, so that's all from here. Now coming ahead, and the important news articles that we are going to cover in the today's session is of 2nd to 4th of August, and you can see a long list of news articles are there, where the first 3 news articles are important for both phase 1 and the phase 2 of the examination, and the remaining are important for only phase 1 of the examination if you are preparing for regulatory bodies exams. But if you are preparing for
the banking examinations, then all these articles are important for your phase 2 examination. Okay, so I hope that all of you are having this much of the clarity. So good evening Vishwajit, Shubh, Harshal, Ananya, Gururaj and all the people here. So guys, this is a time for the quick revision of the previous session. Let's see that who among you have come up with the proper revision of the previous session. And here is the first question. The question is on the World Economic Outlook. The people who are preparing for RBI, a very important report, because we have to do this report very comprehensively from examination point of view, as it has been specifically mentioned in the RBI Grade B syllabus. So the first question, World Economic Outlook, July 2025. First, you have to tell me which organization has released this report. The report has been released by which organization? It is released by International Monetary Fund. That is the right answer, which is headed by Kristalina Georgieva. Absolutely right. Now, according to this report, it has upgraded India's growth expectations. And what is going to be the India's growth forecast for 2025, 26 and 26, 27? That is what you need to identify here. So what exactly is the GDP growth forecast for India for these 2 years? That is 6.4%. Absolutely right, 6.4% is the right answer. Moving ahead, when it comes to the global growth forecast for the 2025, what is the global growth forecast for 2025? We have seen in 2026 it will be 3.1%, but in 2025 it will be 3%. That is the right answer. Moving ahead to the National Financial Awareness Saturation Campaign, which is launched by Department of Financial Services. So here the question is about the duration of this campaign. So what exactly is the duration of the campaign when the Department of Financial Services is running this National Financial Awareness Saturation Campaign, and the duration is from 1st to 30th of September. That's the right answer. Next question, Union Cabinet has approved total outlay of dash for Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. So guys, we have discussed in the previous session that additional 1920 crores have been approved for the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, and it is an ongoing central sector scheme. So ये जो फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड है उसके टाइम पर, that is 2021 to 22 to 2025 26, 1920 crore has been given. But what is the total outlay of this particular scheme? That is 6520 crores. Absolutely right, 6520 crore. That is the right answer. Moving ahead, which of the following ministries has launched an ambitious initiative named Apna Ghar? So Apna Ghar has been launched for the truck drivers, so that they can have proper rest and proper facilities when they are resting while going through these long journeys. What is the name of that ministry? It is a Ministry of Petroleum and Ministry of Petroleum. That is the right answer. Absolutely right. Ministry of Petroleum and Natural Gas is the right answer. Next question. So Dash has become the first Indian to be appointed as President and Chief Executive Officer of Procter & Gamble. What is the name of this person? So कौन बने हैं President and CEO of Procter & Gamble? He has become the first Indian to be so. What is the name of this person? Let's see who will be giving me the right answer to this question. So guys, it is very important. Whenever something happens for the first time, we have to ensure that we are covering it in a detailed manner, right? So the remaining two questions of the previous session are left. So what is the name of this person who has been appointed as the first Indian to be appointed as President and CEO of Procter & Gamble? What is the right answer? Absolutely right. Right answer is Shailesh. Moving ahead, which state government has announced to celebrate 7th August as the Sustainable Agriculture Day? And they will be honoring the birth anniversary of which personality? So what is the name of this state government and what is the name of the person जिनकी birth anniversary को commemorate किया जाएगा? So it is M for Maharashtra and M for Dr. M.S. Swaminathan. So that is the right answer for the last question. Absolutely right. So we can see here that most of the people have given me the right answer in the chat box. That shows that yes, you have revised the previous session aspects and dimensions in a very comprehensive manner. That's really great. और अब हमारी रिवीजन हो चुकी है अच्छे से. अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ. ठीक है जी. So पहला न्यूज आर्टिकल है about Moldova has become the 107th member of International Solar Alliance. So International Solar Alliance का 107th member Moldova बन चुका है. So guys, we all know about the International Solar Alliance, which is an intergovernmental organization, right, which promotes the adoption of solar energy.
So here Moldova has become the 107th member of International Solar Alliance. This is directly related to the sustainable development and environmental issues topic of our syllabus. That's why it is very important. So which country has become the 107th member? It's Moldova. Now we have to understand about the static portion about the ISA. What are the key details that we need to remember? So first thing is that which are the two countries which basically propose the idea of International Solar Alliance? That is, during the COP 21 in Paris, India and France together came up with the idea and proposed the idea of International Solar Alliance, right? And this alliance works to improve energy access and security worldwide and promotes the adoption of solar energy. Apart from that, it is having the vision of let us together make the sun brighter. So दोस्तों ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि आप समझ सकते हैं नाम से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट मीन्स सोलर कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए हमने एक अलायंस किया है वेयर द डिफरेंट कंट्रीज आर becoming the members of this part. और अब मोल्डोवा बन चुका है 107th member. When it comes to the other important key objectives of this ISA, you can see here that we are having a 1000 strategy. अब 1000 strategy में क्या है? First of all, it is about the funding. Then it is about the installation capacity, right? So USD 1000 billion mobilize किया जाएगा for solar investments by 2030. We all know we are having a sustainable development goals that we want to achieve by 2030. Similarly, as a part of ISA, we need to mobilize $1,000 billion for solar investments by year 2030, right? Then we want to provide the clean energy accessibility. See, जब हम इतना पैसा देने वाले हैं तो absolutely in the return we just expect that हमें clean energy का access मिलेगा. So clean energy access कितने लोगों को मिलेगा? 1000 million peoples को मिलेगा, राइट? अब इसके अलावा क्योंकि सोलर पैनल्स पर, सोलर एनर्जी पर हमने इतना फोकस किया, तो सोलर कैपेसिटी की इंस्टॉलेशन भी बढ़ाई जाएगी. हाउ मच? 1000 गीगावाट्स. सो दैट्स वेयर द 1000 strategy is being adopted by the International Solar Alliance. Okay, and we also want to reduce 1000 million tons of carbon dioxide emission. See guys, ये जो पूरी लड़ाई है, पूरा जो इनिशिएटिव है, ये किसके बेसिस पर है, क्यों किया गया है? सो दैट कि हम अपने नेचर को कंजर्व कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम कर सके, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम हो सके. दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन अडॉप्शन ऑफ द सोलर एनर्जी. सो दैट्स वेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. उसको भी हमें कम करना है, कितना? बाय 1000 मिलियन टन. सो ये 1000 स्ट्रेटेजी को याद रखिए, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ कम टू द हेडक्वार्टर्स. So when it comes to the headquarter of ISA, it is headquartered in Gurugram. So Gurugram, India के अंदर इसका headquarter है. 9 comprehensive programs है which focuses on 3 priority areas, that is analytics and advocacy, capacity building and programmatic support. Now guys, apart from this, in March 2025, we read a news article and we discussed it in a very detailed manner that we all know that ISA की जो presidency और co-presidency है, उसका जो tenure है वो extend किया गया. Again, India and France is having the presidency and co-presidency of International Solar Alliance for the upcoming years, right? Now I would like to ask you that who is presently serving as the head, or we can say the Director General of International Solar Alliance? Can anybody tell me that? So my dear friends, can anybody tell me that who is presently serving as the head or the Director General of International Solar Alliance? What is the name of this person? That is Ashish Khanna. Ashish Khanna is the right answer. Earlier it was Ajay Mathur who was serving as the Director General of International Solar Alliance, and now it is Ashish Khanna which is serving as the head of the International Solar Alliance. Absolutely right. Everybody has given the right answer. So that's all from the International Solar Alliance. Now I want to ask you, what is the name of 107th member of the International Solar Alliance? What will be the right answer? If this question is being asked in the exam, the right answer will be M for Moldova. Absolutely right. Now if I ask you that in which year the ISA was established, which are the 2 countries which proposed the idea, which started this global initiative of International Solar Alliance, what is the right answer? The right answer to that question is India and France. And what is the key strategy which is going to help us to understand the objectives of the ISA? Just remember the number 1000. That's it. Number 1000 is going to help you out to basically come up with few points that are under the objectives of the ISA. And where is the headquarter of ISA? It is in Gurugram, Haryana, India. Absolutely right.
So everybody is able to understand this. Now let's move on to the next news article, that is India Electric Mobility Index. So my dear friends, we all know that in India the government is really focusing on the electric mobility, and now you can see here that this is the era of electric vehicles. You can see here that अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं तो हमें आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने देखने को नहीं मिलते थे, बट आज जब आप रोड पर जाते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट be able to see electric vehicles around you, right? So basically what is the reason? So basically electric vehicles को adopt करने के लिए even Indian government ने काफी schemes भी launch की, like FAME is one of the very important scheme which has been launched by the government of India. So when it comes to this, a very important part is addressing the carbon dioxide emissions, right? And to also contain the pollution. Apart from that, you all know that India is having a target of becoming the net zero carbon emission free country by which year? Can anybody tell me that in the chat box कि किस year में India target achieve करता है? Sorry, India is aiming to become the net zero carbon emission free country, that is by 2070. और 2070 तक ये target achieve करने के लिए we have to ensure that जो हमारा ये पोल्यूशन लेवल है इसको हम कम कर सके. वो कैसे हम करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कहां से हम कम कर सकते हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से अगर हम कम करेंगे दोस्तों, कैसे कम कर सकेंगे? जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे इसके अंदर? by doing the research and innovation. How we are connecting this I will be telling you in the upcoming parts of the slide. Okay, so basically now to see जो कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं दोस्तों, so different states के अपने plans हैं. Different states are having their own plans and having their own electric vehicle goals. So in order to assess and monitor whether they are able to attain these goals, the government of India basically under the Niti Aayog they have come up with the India Electric Mobility Index. तो इन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च किया है. किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया है. तो एक ऐसा टूल है जो कि ट्रैक करेगा और बेंचमार्क करेगा प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन अचीविंग देयर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स. उनके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स को उन्होंने कितना अचीव किया है इस चीज को ट्रैक करेगा. And how we will be able to do that? With the help of electric mobility index. किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया. It will track, evaluate and score all the Indian states and union territories out of 100 across 16 indicators. अब जो 16 इंडिकेटर हैं इनको 3 डिफरेंट पिलर्स के अंदर रखा गया है. What are these 3 pillars? देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी. अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? जब हम रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे. When we will be working on research and innovation, after that what is the next step? Like जब आप किसी भी लॉन्ग राइड पर जाते हैं, हाईवे राइडिंग पर जाते हैं दोस्तों, एंड यू आर हैविंग अ पेट्रोल व्हीकल, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट कि हाईवेज पर क्या होना चाहिए? पेट्रोल पंप्स होने चाहिए. सिमिलरली इफ वी विल बी अडॉप्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो व्हाट एग्जैक्टली शुड बी देयर? देयर शुड बी एडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर readiness. Now when this will happen, what we can do? We can do the electrification of the transport sector in our country. So these are the 3 pillars. First pillar is research and innovation, then charging infrastructure readiness, and then transport electrification progress. So these are the 3 pillars under which the 16 indicators have been placed under the electric mobility index, which will be helping us to understand that whether the states and union territories they are able to achieve and they are able to learn from their peer groups also that how these other states are doing better compared to them. So that's how the electric mobility index will evaluate across the states and union territories. It will identify that what are the key reasons of the success of some states which can be imparted to the other states also. Apart from that, it will also lead to informed decision making, foster healthy competition and promote sharing of best practices. जो best technologies है, best practices है, अगर किसी ने अच्छे से इसको अडॉप्ट कर लिया तो हम बाकी के स्टेट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली मेट्रो का. इंडिया में अगर कहीं पर भी मेट्रो बनती है सो उसके लिए एक आइडियल एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो, राइट? तो वहां पर इस्तेमाल की जाती है वो सभी प्रैक्टिसेस जो दिल्ली मेट्रो के अंदर यूज की गई हैं. सिमिलरली अगर हमारी एक स्टेट ने कोई अच्छा प्रैक्टिस यूज किया इन ऑर्डर टू for the electrification of the transport sector in that state, so the same technology, the same practices, the
same ways methods can be used by other states also in order to ensure that yes they are also doing the electrification of this part. तो यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज रिलीज्ड दिस इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी हियर. So what is the right answer to this question? The right answer is Niti Aayog, right? And what are the three pillars under which the 16 indicators are being placed under this index, which is going to behave like a tool which is helping us, the states and union territories, to monitor their EV goals. What are these three pillars? First one is the research and innovation. Then we will be moving on to the charging infrastructure. And then we will be moving on the electrification of the transport sector, right? So these are the three pillars under this particular part. Absolutely, I can see here in the chat box, everybody has given the right answer to this question. Okay, so guys, we are done with this index. I hope everybody is able to understand it. अब हम बढ़ते हैं अपने next news article पर, that is India Post Payment Bank. तो दोस्तों, India Post Payment Bank ने एक बहुत ही अच्छा step लिया and they have come up with the आधार based फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. अगर किसी पर्सन को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द फिंगरप्रिंट्स और द बायोमेट्रिक्स, राइट? क्योंकि जब हम बात करते हैं दोस्तों एल्डरली पीपल की, राइट, तो उनके फिंगरप्रिंट्स थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं विद द एज, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट वन टाइम पासवर्ड्स, तो वन टाइम पासवर्ड से अब हमें इसके ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है इफ देयर इज अ पर्सन हु वांट टू डू सम ट्रांजैक्शन. इसके अलावा इफ देयर कम्स एनी नेचुरल डिजास्टर माय डियर फ्रेंड्स एंड द पर्सन हैज लॉस्ट देयर हैंड्स, राइट, और वहां पर बहुत ही रिस्की होता है कि आप किसी का थंबप्रिंट लो या फिर कोई बायोमेट्रिक लो, उस टाइम पर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैन बी अ वेरी यूजफुल टूल एंड दैट इज व्हाई दिस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर द बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज अलाइंड विद द गोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द डिजिटल इंडिया एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो यहां पर अगर हम बात करें किस बैंक ने इसको रोल आउट किया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रोल आउट किया है. ये आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम किसके अंडर डेवलप हुआ? अंडर द UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑल्सो इश्यूज आधार कार्ड इन आवर कंट्री, राइट? सो ये किस चीज से के डिपेंडेंसी को रिमूव करेगा? दैट इज द वन टाइम पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, जो कि बैरियर का काम करते हैं फॉर द एल्डरली और डिफरेंटली एबल्ड पीपल. Apart from that, with the help of this, we will be able to ensure the fast and the contactless transactions. There will be safe banking during health emergencies. Health emergencies के टाइम पर भी safe banking practices का इस्तेमाल किया जाएगा with the help of face authentication system. I hope this is clear. सो बैंक का जो विजन है, आपका बैंक आपके द्वार, सो ये इसके साथ भी अलाइन होता है, ठीक है? सो बेसिकली हमने देखा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को रोल आउट किया है अक्रॉस द इंडिया. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. इसको कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में कुछ स्टैटिक डिटेल्स को कवर करते हैं. सो बेसिकली इट वॉज लॉन्च ऑन September 1, 2018. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली और ये ऑपरेट किस मिनिस्ट्री अंडर करता है? इट इज ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ऑपरेट करता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप प्रॉपर 100% है, ठीक है? और इंडिया पोस्ट का जो पूरा नेटवर्क था, उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके सभी कस्टमर्स को दे विल बी सर्विंग अंडर द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. और अकॉर्डिंग टू द RBI गाइडलाइंस, account holder can hold maximum of ₹2 lakhs in their regular savings account. अगर 2 लाख से ज्यादा होता है तो वो उनके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका स्टैटिक पोर्शन भी हमने कवर किया. Why? Because India Post Payment Bank was there in the news article. And why it was in the news article? Because it has rolled out the facility of Aadhaar based face authentication system. So this is something that we need to understand from examination point of view. Okay, I hope everyone is clear with this news article. If yes, please give me a thumbs up in the chat box so that we can move ahead to the next important news article. So thank you for giving me your responses. So here the next article is about the Matri 1. The Matri 1 initiative has been launched during the One Mahotsav.
सो वन महोत्सव के दौरान की सेलिब्रेशन के दौरान मातृ वन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया रिसेंटली। अगर वन महोत्सव सेलिब्रेशन की बात करें तो एक एनुअल अफॉरेस्टेशन फेस्टिवल है जो हर साल एनुअली इस फेस्टिवल को कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर वी बेसिकली आर प्लांटिंग द ट्रीज, राइट। So it is celebrated in the first week of July to encourage tree planting and environmental awareness. Environment के अराउंड अवेयरनेस और ट्री प्लांटेशन को एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वन महोत्सव इज बीन सेलिब्रेटेड। अगर हम बात करते हैं मातृ वन इनिशिएटिव की, इसको किसने लॉन्च किया? इट वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब दोस्तों मातृ वन इनिशिएटिव के अंदर क्या होने वाला है? हम एक थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं। व्हाई द अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इज देयर इन द न्यूज आर्टिकल? व्हाई इट इज इन्वॉल्वड इन द लॉन्चिंग ऑफ दिस इनिशिएटिव? बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट इन गुरुग्राम। गुरुग्राम द सेम प्लेस वेयर ISA का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। सो गुरुग्राम के अंदर थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट हम बनाएंगे अराउंड द अरावली हिल एरिया, और ये बेसिकली इंस्पायर्ड है बाय द आइडिया ऑफ ऑनरिंग मदरहुड अंडर द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन। तो दोस्तों एक पेड़ मां के नाम कैंपेन हमने पढ़ा था, राइट, एंड वी बेसिकली डिस्कस्ड इट ड्यूरिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और यहां पर हमने देखा था दैट वेयर वी आर गिविंग ए ट्रिब्यूट टू आवर मदर नेचर बाय प्लांटिंग द ट्री, राइट। Similarly on the similar lines we have come up with the मातृ वन इनिशिएटिव, जहां पर हम एक थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं वेयर इन गुरुग्राम। सो दिस इनिशिएटिव विल प्रमोट अर्बन अफॉरेस्टेशन। इस इनिशिएटिव के जरिए हम अर्बन एरियाज में और ज्यादा ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज करेंगे। इट विल लीड टू पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द ग्रीन इनिशिएटिव्स, स्ट्रेंथनिंग इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस इन अर्बन इंडिया। जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस है अबाउट द इकोलॉजी, अबाउट द एनवायरमेंट, उसे और ज्यादा एनहांस किया जाएगा, सेंसिटिव किया जाएगा, सो दैट दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग and sensitizing the importance of the ecological consciousness in our country. Okay, apart from that Aravali Hills के around ये location है जहां पर theme based forest area बनाया जाएगा, and this is one of the oldest mountain ranges where we are going to do this. Okay, so that's all from here that we need to understand. So Matri One initiative we have covered. The two ministries are involved, Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Environment, Forest and Climate Change is there. क्या करेंगे? थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे। कहां बनाएंगे? गुरुग्राम में बनाएंगे। That's all we need to understand from here. So guys, why I am basically giving you all these aspects in the dimension separately? Because I want you to focus across these lines. जब आप किसी ऐसे आर्टिकल को कवर करते हैं तो किन एरियाज पर हमें फोकस करना है, किन डायमेंशंस पर हमें फोकस करना है। So I just want you to understand this, that कि अगर एक ऐसा न्यूज आर्टिकल है, इवन इफ आई एम नॉट कवरिंग हियर, बट इफ यू आर रीडिंग इट समवेयर, सो आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सके कि क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। सो आई जस्ट वांट यू टू बिकम आत्मनिर्भर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो आई होप दैट एंड वी आर एबल टू अचीव दैट पार्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज द नेशनल वाटरवे 57। तो नेशनल वाटरवे 57 को ऑफिशियली नोटिफाई किया गया, एंड ऑन विच रिवर इट इज इन द कोपिली रिवर। Kopili river is the tributary of Brahmaputra river which basically flows through major areas of Assam and Meghalaya। तो असम और मेघालय से फ्लो करती है कोपिली रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, और उसे नोटिफाई किया गया है एज अ नेशनल वाटरवे 57। ठीक है, और इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है फॉर द कार्गो मूवमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो 10 साल से ये जो हमारा एरिया था दोस्तों ये बंद था, बट अब इसको रिवाइव किया गया है बाय द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो द मार्क्स द रिवाइवल ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट आफ्टर मोर देन 10 years इन असम विद द मेडन इंट्रास्टेट कार्गो ट्रायल रन। सो हमने एक ट्रायल रन किया, उसके बाद हमने देखा कि यस इट इज सक्सेसफुल, तो अब इसको ऑपरेशनली शुरू कर दिया है कार्गो मूवमेंट वहां से, राइट। दैट इज द नेशनल वाटरवे 57 एट कोपिली रिवर। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, नेशनल वाटरवे 57 कौन से रिवर पर है? व्हाट विल यू आंसर? कौन से रिवर को आप मार्क करेंगे? दैट इज कोपिली रिवर, दैट इज द राइट आंसर। और इसको ऑपरेशनल करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिवली वर्क किया है ऑन अनलॉकिंग द नेविगेशनल पोटेंशियल ऑफ रिवर्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री। और यहाँ पर काफी रिवर्स पर हमने ये नेशनल वाटरवेज को बनाया है, लाइक वी आर हैविंग ब्रह्मपुत्रा, बराक, धनसिरी and now Kopili. That is the National Waterway 57. So just remember, National Waterway 57 just directly related to the Kopili River, a tributary of Brahmaputra. Absolutely right.
So thank you Ananya for summarizing the news article that we have covered. Now let's move ahead to the next news article, that is your 71st National Film Award. So दोस्तों आप सभी entertainment के लिए movies देखते हैं, right? So वहां पर the people who are doing their best, उनके effort को recognize करने के लिए we came up with the National Film Awards. And this year the National Film Awards for 2023 have been announced by the Government of India, right? And here you will see that some kind of very important names are there, and apart from that some very big achievements are there. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर की, so that is been won by शाहरुख खान for जवान movie and विक्रांत मसी for 12th फेल movie. I believe that जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने 12th फेल मूवी को जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा है दोस्तों, सो आई जस्ट वांट यू टू जस्ट टेक आउट सम टाइम, जो आप अपनी लेजर एक्टिविटीज पर स्पेंड करते हैं बाय स्क्रॉलिंग द रील्स और डूइंग अदर थिंग, तो थोड़ा टाइम निकालिएगा एंड ट्राई टू वॉच दिस मूवी. इट इज रियली अ वेरी इंस्पिरेशनल मूवी. सो विक्रांत मसी हैज वन दिस अवार्ड फॉर 12th फेल एंड शाहरुख खान हैज वन this particular award for his movie Jawan. Let me tell you here, in his entire career, this is the first national award which has been won by Shah Rukh Khan. So that is a big achievement for him, as even after ruling the complete movie industry, this is the first such award for him. And similarly, the first such award has been won by Rani Mukherjee as the best actress for the movie Mrs. Chatterjee versus Norway. So ये दो best actor and best actress are the most important awards that we need to understand here. Apart from that, best supporting actor की बात करते हैं, so Vijay Raghavan and Muthupeti Somu Bhaskar has won this particular award. In the best feature film, again 12th fail has won the award. Best non-feature film was been won by Flowering Men. Best film in ABGC has been won by Hanuman. Best director in cinematography won by The Kerala Story, and the best documentary has been won by God, Vulture and Human. So these are the most important awards that we need to understand here. So if I ask you who are the best actors in the National Film Awards for 2023, what will be the right answer? The right answer is Vikrant Massey for 12th fail and Shah Rukh Khan for Jawan. If I ask you the best actress for the National Film Awards 2023, what is the name of this person? Rani Mukherjee. And for which movie she has won this award? That is Mrs. Chatterjee versus Norway. So these awards are very important. Then best feature film award was been won by which movie? It was been won by 12th fail. 12th fail is the right answer. Okay, so ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और बैंकिंग एक्सपीरियंस, आपका एग्जाम काफी नियर है, सो प्लीज इंश्योर दैट आप इन अवार्ड्स को जरूर अच्छे से याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ ना कोई क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो अगर हम बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करते हैं. सो नेशनल फिल्म अवार्ड्स को शुरू किया गया था 1954 के अंदर, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड्स देती है? इट इज बीन अवॉर्डेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल which operates under the Ministry of Information and Broadcasting. So Ministry of Information and Broadcasting is the name of the ministry, जिसके अंडर Directorate of Film Festivals works there, and it awards the film industry for their as recognizing their work. Okay, so that's all that we need to cover from this part. National Film Awards for year 2023 is done, and I hope कि आप सभी को ये अवार्ड विनर्स का नाम अच्छे से याद है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज नो योर वेव्स कैंपेन 2025. तो नो योर वेव कैंपेन को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है in New Delhi, and this serves as a curtain raiser to the National Handloom Day. So guys, in the previous session we have covered that we will be celebrating Sustainable Agriculture Day to mark the birth anniversary, to commemorate the birth anniversary of Dr. M.S. Swaminathan on 7th of August. Let me tell you here, every year 7th of August we also celebrate as a National Handloom Day. So my dear friends, I want to take you to the backward. In 1905, you must have read when you were reading the history in your childhood days. In 1905, a movement was been started in India, that was the Swadeshi movement. Swadeshi movement was started, right? And that was started on 7th of August in 1905. To commemorate this day, we also named National Handloom Day on the 7th of August for promoting the handloom industry of our country, to promote awareness, to appreciate the work of handloom weavers in our country. I hope now you will be able to better understand it. We have covered some previous aspect, some
स्टैटिक पार्ट ऑल्सो अबाउट दिस पर्टिकुलर डे, और अभी 7 अगस्त को जब ये डे सेलिब्रेट होगा तो इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे। दैट इज अ नेशनल हैंडलूम डे ऑन 7 अगस्त। तो 7 अगस्त से 2 चीजें आपको याद रखनी है, नेशनल हैंडलूम डे एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा इज अ वेरी वेल नोन इनिशिएटिव which has been taken by Prime Minister Modi ji, and as a part of this particular program, he basically interacts with the students, teachers and the parents during the examination times, right? So काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, तो उस टाइम पर बात करके थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाता है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। सो बेसिकली व्हाई एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग दिस इन आवर सेशन, बिकॉज Pariksha Pe Charcha has been conferred with the Guinness Book of World Records for the most people registered on a citizen engagement platform in 1 month। एक महीने के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस किसी प्लेटफॉर्म और किसी प्रोग्राम के लिए होना, ये रिकॉर्ड बनाया है परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ने, राइट? सो 3.53 करोड़ वैलिड रजिस्ट्रेशंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द 8th एडिशन ऑफ पीपीसी 2025। अगर हम बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज करती है अलॉन्ग विद माई जीओवी, और 2018 से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ठीक है, सिंस 2018 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज कंडक्टिंग द परीक्षा पे चर्चा। ये प्लेटफॉर्म है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दैट फॉस्टर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, टर्न स्ट्रेसफुल एग्जाम पीरियड्स इनटू एनकरेजिंग एंड एम्पावरिंग एक्सपीरियंसेस। सो यहां पर ज्यादा इतना हमें ध्यान नहीं देना, इंपॉर्टेंट चीज है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज बिहाइंड द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दिस परीक्षा पे चर्चा अलॉन्ग विद माई जीओवी, और पीपीसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं फॉर द मोस्ट वैलिड रजिस्ट्रेशंस, राइट, इन अ पर्टिकुलर मंथ। दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर। वन द Esports World Cup, so he basically represented Team Liquid and defeated Team Falcon। तो टीम फाल्कन्स को के एक प्लेयर को हराने के बाद ये बन चुके हैं विनर of the Esports World Cup, right, which is taking place in Riyadh, Saudi Arabia. So please remember the name Magnus Carlsen. Next news article, Block 2 Bluebird satellite. So guys, recently, just previous week only, we have covered the NISAR. So NISAR, Earth observation satellite by which was being launched by India's ISRO and NASA together. तो इंडिया के इसरो और नासा ने साथ में लॉन्च किया था निसार, विच इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और ये ऐसा पहला मोमेंट था जब इसरो नासा ने साथ में एक सैटेलाइट के ऊपर काम किया। अब लेट मी टेल यू हियर दैट इसरो इज फोकसिंग ऑन अनदर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, एंड दैट इज दिस टाइम इट इज द ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज डेवलप्ड बाय AST स्पेस मोबाइल, और इसको लॉन्च किया जाएगा विद द लॉन्च व्हीकल Mark 3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। Now guys, as the Block 2 Bluebird satellite is in the upcoming plans of the ISRO, I would like to ask you, can anybody tell me that what is the full form of this NISAR? What exactly the NISAR stands for? कोई मुझे बता सकता है निसार की फुल फॉर्म क्या है? I hope and I believe कि पहले 2 लेटर्स तो सभी बता देंगे, that is NASA and in ISRO. But what exactly SAR stands for? SAR. What exactly SAR stands for? Please tell me here. So, is there anyone who can tell me the right answer here? अगर आपको याद नहीं है दोस्तों, तो ये आपका होमवर्क है कि याद रखिए, because this can be asked in the examination. निसार का फुल फॉर्म भी आ सकता है। ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो इसरो और नासा ने लॉन्च किया। ये ऐसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, एंड इट वाज प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट। So please make sure that you are commenting me the right answer in the comment section, okay, after the end of this session. Moving ahead, 43rd Lokmanya Tilak National Award. This award has been recently given to Union Minister Nitin Gadkari ji for his significant contribution for the progress of India. So Lokmanya Tilak National Award, if a question has been asked, which personality has been conferred with this award, what will be the right answer? The right answer will be Nitin Gadkari ji. That is the right answer. Next news article, Shibu Soren passes away. So guys, former Jharkhand Chief Minister Shibu Soren, who is also the co-founder of Jharkhand Mukti Morcha, has passed away recently. Let me tell you here that he is the father of Hemant Soren, who is presently serving as the Chief Minister of Jharkhand. So he was the leader of Jharkhand Mukti Morcha for the past 38 years, और यूनियन कैबिनेट में भी इन्होंने सर्व किया है।
और ये मिनिस्टर ऑफ कोल रह चुके हैं. सो प्लीज रिमेंबर द नेम शिबू सोरेन हु पास्ड अवे रिसेंटली. ओके, so that's all that we need to understand and cover from the examination point of view from the 2nd to 4th of August 2025. And now guys, we will be starting up with the most important part of the today's session, that is the MCQs, because in the examination MCQs ही वो हैं जो आपको help करेंगे to clear the examination, because in the exam you are supposed to answer the MCQs only, right? So here is the very first question for all of you. The question is on the International Solar Alliance. आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर. सो ऐसा जब भी कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बट ठंडे दिमाग से कामली होकर आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है. सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड थिंग, आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड क्या है क्वेश्चन की. थर्ड थिंग, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. अब सबसे पहला स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द सेंट्रल टॉपिक. व्हाट इज द सेंट्रल टॉपिक? इंटरनेशनल सोलर अलायंस. Second question, identify the demand of the question. What we need to identify here? We need to identify correct statements. तो हमें correct statements को identify करना है. What is the third step? Identify the keywords. अब keywords पर focus करेंगे. Okay? So International Solar Alliance launched by Government of India and Germany. पहली statement दोस्तों, India और Germany. Is it right or wrong? As per our discussion, it was India and France and not the Germany. So this statement is incorrect. Second statement, one of the key goals of ISA, mobilize investment of 1,000 billion US dollars, which is absolutely right. हमने कवर किया, एक 1000 स्ट्रेटेजी है ISA के अंडर, 1000 बिलियन US डॉलर्स को मोबिलाइज करना चाहते हैं, absolutely right. Third statement, distinction of being first ever international governmental organization, established its headquarters within territory of India, specifically at Gurugram. So third statement is also right. So what is the right answer here? So statement 2 and 3 are correct here. So as per you, what is the right answer? It is option B. That is 2 and 3 only. Absolutely right. This is the right answer. I can see here Rover, Herschel, Gururaj. Everybody has given the right answer to this question. Well done guys. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Next question is National Waterway 57. यहां पर आप देख सकते हैं रिवर्स का नाम दिया गया है. सो जस्ट नेशनल वाटर 57 को देखा और कोपिली रिवर का नाम देखा, जस्ट मार्क द आंसर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दैट इज द अप्रोच. ओनली यूजिंग दिस काइंड ऑफ अप्रोच यू विल बी एबल टू at least read out the 80 questions in 25 minutes in the examination. In the RBI exam, we all know 25 minutes में 80 questions हमें करने होते हैं, right? So here the right answer is option B again, that is Kopili River. Third question. So which two Bollywood actors won their first ever National Film Awards? तो guys यहाँ इस साल के National Film Awards की जो मेजर हाईलाइट है वो ये है कि पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है 2 वेटरन एक्टर्स को. What are the name of these 2 people? One is Shah Rukh Khan, other one is Rani Mukherjee. So what is the right answer? Option C, Shah Rukh Khan and Rani Mukherjee. Just remember SRM. बेस्ट एक्टर्स और एक्ट्रेस का नाम याद रखने, SRM को याद रखिए. शाहरुख, रानी, मसी. Shahrukh Khan, Rani Mukherjee and Vikrant Massey. So these 3 are the people who are the best actors. These are best actors, she is the best actress. Just what you need to see here. Okay? I hope this is clear. So दोस्तों अब हम बढ़ते हैं चौथी क्वेश्चन की तरफ, that is the Matri 1 initiative. और आपको आइडेंटिफाई करना है which 2 ministries jointly launched this initiative. So Matri 1 initiative के ऊपर you have to identify the name of the ministries which have jointly launched this particular initiative. Rest all the details are been given. So first statement, Minister of Housing and Urban Affairs and Minister of Environment, Forest and Climate Change. So as per our discussion, these are the 2 ministries, so we are not even required to see the other options. Just mark the option A as the right answer and move on to the next question, right? So absolutely right, option A is the right answer. Well done guys. So with this, we are done with the important questions and now we are having a homework question for all of you. Homework question आप सभी के सामने है. The question is on India Electric Mobility Index. And you have to identify here the incorrect statement. तो incorrect statement identify करनी है आपको and the central topic is India Electric Mobility Index. इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करने के बाद, ठीक है? अगर आपने इस क्वेश्चन को सही से आंसर किया कमेंट सेक्शन के अंदर, यू विल बी द नेक्स्ट स्टार परफॉर्मर ऑफ द टुडे सेशन. अगर हम बात करते हैं स्टार परफॉर्मर फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, तो जिन स्टूडेंट्स ने इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व किया था, दैट वाज ऑन द World Economic Outlook, July 2025. So the right answer to the question was option C, that is 1 and 3 only. So here
This is the list of all the star performers of the previous session, which includes Praktox, Ashish, Mayank, Harish, Nikhil, the officer, Vishwajit, Pragya, Akshita, Vyas, Abhyas, then we have Shreyansh, Arnav, Akashdeep, BTC, Pranathi and Pallavi. So all the people guys, I'm really proud of you all that you are, with your dedicated efforts and hard work, you have started giving me the right answers in the chat box. And if you also want your name to be mentioned here in the next session, please ensure that you are giving me the right answer to this question in the comment section. So guys, apart from that, when you will be coming to the next session, please ensure कि आज का सेशन अच्छे से रिवाइज करके है. रिवाइज कैसे करेंगे? पीडीएफ के जरिए करेंगे. पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड join the Telegram channel, and from joining the Telegram channel you will be able to access all the PDFs of the YouTube session that we are conducting on our EduTap's YouTube channel. Right? Once again guys, before concluding this session, a very important part that we have come up with this never before offer for all of you. So please ensure that you are availing the benefit of this offer. सो अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपको जस्ट एक कोड यूज करना है, वन टाइम 74, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन अवेल फ्लैट 74% ऑफ. सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, दिस इज फॉर देम, राइट. जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जिनको नहीं लेना, दैट्स टोटली फाइन गाइस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी बैंकर्स हैं एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर द कैब एग्जामिनेशन, जैब एग्जाम, तो गाइस जैब के लिए हमारे पास एक कोड है where we are offering you 80% off in our JAB course. तो JAB course के लिए आपको वन टाइम 80 कोड का इस्तेमाल करना है, राइट. अगर कोई बैंकिंग एक्सपीरियंट है या फिर EPFO एक्सपीरियंट है, डेफिनेटली उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं एंड दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्सेज, राइट. सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन. अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई बिलीव कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. And if you are having any kind of doubts, you need any kind of mentorship or the guidance also, apart from the session details, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप mentorship या guidance support जाते हैं, तो बेसिकली आप हमें शेयर कर सकते हैं अपना डाउट और via mail at hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241. Okay, so guys, that was all from the today's session, and I can see in the chat box that there is not a single query here, so that means we are good to conclude the session. I will be meeting you in the next session, but before ending the session, a very important announcement for all of you, that tomorrow please make sure that you are joining us at 6 p.m. because tomorrow, my dear friends, we will be having a monthly revision session. So monthly revision session होगा, किसका होगा? करंट ऐप ऑफ जून 2025. सो आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जून 2025 का करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लिया है, तो वो इस सेशन में आइए और देखिए कि क्या लेवल है आपकी प्रिपरेशन का, कितनी चीजें आपको याद हैं, क्या क्या आप भूल चुके हैं. तो ये वेकअप कॉल मिलेगी आपको इस मंथली रिवीजन सेशन के अंदर. इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जून का करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उनके लिए और भी अच्छी चीज है कि आप आइए सेशन के अंदर, देखिए सेशन को, जुड़िए सेशन के साथ और उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कीजिए, विच कैन हेल्प यू टू क्लियर this year's exam and become the next officer in your desired organization, right? So please ensure, please note the time, 6 p.m. tomorrow at EduTap's YouTube channel. We will be having monthly revision session of current app for June 2025. Okay, so that's all from the today's session. Now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all